हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथनोट्सपीडिया। माई सेल्फ अजीत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पैक्ट सेट के बारे में। दोस्तों, इसके पिछले वाले जो वीडियो था वहाँ पे हम लोग ओपन सेट, क्लोज सेट एंड बाउंडेड सेट के बारे में डिस्कस किया था। उस सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप चाहे तो उस वीडियो को पहले एक बार देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यहाँ जो हम कॉम्पैक्ट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रियल एनालिसिस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पैक्ट सेट हम किसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वो सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड होगा इस लेसन में, वो है, पहले कवर्ड होगा डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। हम डेफिनेशन यहाँ पे ओपन कवर के नज़रिए से देखेंगे कि कैसे हम एक सेट को कॉम्पैक्ट सेट बोल सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ सम कॉम्पैक्ट सेट इन आर, कुछ सेट के बारे में एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, देन देखेंगे व्हेन डज ए सेट इन आर इज कॉम्पैक्ट। अब आर का कोई भी सबसेट कब एक कॉम्पैक्ट सेट होगा। ठीक है, हम वो एक रिजल्ट के जरिए देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइनली हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट के कुछ वेल नोन प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसकी मदद से हम एग्ज़ाम के कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लेसन। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं हम कॉम्पैक्ट सेट किसको कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। इसके कॉम्पैक्ट सेट के डेफिनेशन के लिए हम लोगों को पहले एक ओपन कवर के बारे में जानना पड़ेगा। ओपन कवर क्या होता है? ठीक है, ओपन कवर, सपोज कैपिटल A is a subset of R. Okay, subset of R. Now consider the family of open set UR। UI कैसे फैमिली है? यहाँ पे each UI ओपन होगा। ठीक है, such that a subset of union of UI I is equal to 1 to infinity। अगर ये सारे जो UI होगा, अगर उसका यूनियन आप लेते हो, अगर वो ए सेट का सुपर सेट होगा, देन वी कॉल सिंगलटन UI is an open cover of A। ओके, तो हम कोई भी एक सेट का ओपन कवर कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक फैमिली ऑफ ओपन सेट्स, जो कि UI यहाँ पे डिनोट किया है मैंने। अगर फैमिली ऑफ ओपन सेट्स एग्जिस्ट करता है सच दैट ए सबसेट ऑफ ऑल द यूनियन ऑफ दैट सेट, देन दैट फैमिली इज कॉल्ड द ओपन कवर ऑफ A। ओके, नाउ come to the point of compact set. What is compact set? Capital A, let be a subset of R, okay, is said to be compact if every open cover of capital A has finite
सब कवर। ओके, हम एक कोई भी एक आर का जो सेट है उसको कब हम एक ओपन कब एक कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे, अगर एक कोई भी आप ओपन कवर लेते हो, अगर कोई भी आर्बिटरी ओपन कवर लेते हो, अगर उसका फाइनाइट एक सब कवर रहता है, फाइनाइट सब कवर मतलब ये जो आप पहले हम यहाँ पे UI जो ओपन कवर लिया था, इनमें से अगर कोई एक ओपन कवर, कोई एक फाइनाइट नंबर ऑफ आपको UI मिल जाता है, तो सपोज यहाँ पे मिल जाता है U1 U2 डॉट 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 UK, such that you take all the union of that set and also you can contain the set A। ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट के अंदर अगर आप A को डाल सकते हैं, तो उस केस में हम A को कॉम्पैक्ट सेट बोलेंगे। एक्चुअली यहाँ से ही मोटिवेशन था। एक्चुअली फाइनाइट, हम लोग जो फाइनाइट सेट पढ़ते हैं, फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, जिस कोई भी सेट में अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लेते हैं उसको तो हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट का ही जो जनरलाइजेशन है वही है कॉम्पैक्ट सेट। फाइनाइट सेट का भी जनरलाइजेशन हम करते हैं आर में और एनिमेट्रिक स्पेस में, जो कि कॉम्पैक्ट सेट होता है। तो हम कॉम्पैक्ट सेट कब बोलेंगे एक सेट को, अगर कोई भी सेट, उसका अगर कोई भी ओपन कवर रहता है, अगर उस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है, फिर हम उस सेट को कहेंगे उस सेट को कहेंगे कॉम्पैक्ट सेट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ सम ओपन कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, consider the set capital A is equal to 0,1। क्या ये सेट कॉम्पैक्ट होगा, क्या ये सेट कॉम्पैक्ट होगा? चलिए देख लेते हैं कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पहले हम इस सेट का एक ओपन कवर लेंगे। ठीक है, suppose consider the set 1/n, 1, such that n belongs to n and n greater equal to 2. We are going to prove that this set is an open cover of that set A. Okay, any arbitrary open cover. So what we need to prove? We need to prove 0,1 is a subset of union of n is equal to 2 to infinity 1/n, 1. This is an open cover of, if we can prove this, then that will be an open cover of the set 0,1. Okay, so what we need to prove here? We need to prove this. Okay, so let us prove that. So suppose x belongs to 0,1, then what can I say? X greater than 0. Okay, then by Archimedean property there exists n belongs to n such that nx greater than 1. Okay, then what we get from this? 1/n less than x. Okay, that means 1/n less x less 1। लेस वन कहाँ से आया? यहाँ से, क्योंकि x 0,1 के अंदर है तो x लेस देन 1 है, इसलिए x कहाँ गया? x लेस देन 1।
that implies X belongs to union of 1 by n is equal to 2 to infinity. For all n greater equal to 2, that is true. Okay, that's why we started from this and we come to this. Okay, started from that and come to this. That means this is proved, this subset. So thus this become an open cover of 0, 1. Now we will prove that this open cover does not have any सब कवर. जो ओपन कवर है वहाँ पे कोई भी सब कवर नहीं है. ठीक है. So suppose there exists a सब कवर. Okay, we will prove this by method of contradiction. Okay, so suppose there exists an सब cover. Okay, that means there exists n1, n2, nk. ठीक है, such that capital A is n is equal to 1 to k 1 by nk, 1. Okay, we assume that there are subcover and there exists a subcover. So if there exists a subcover, then we can say a subset of that. Okay, now call this 1. Okay, now suppose any value m lesser equal to n. Okay, then that will imply 1 by m greater equal to 1 by n, and that will imply 1 by m, 1 जो इंटरवल होगा वो कंटेंट किसके अंदर होगा 1 by n, 1. Okay, now how this happen? So suppose the two value 1 by 2 and 1 by 3. Okay, here 1 by 3 is 1 by 2 is greater equal to 1 by 3. Okay, तो नंबर अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे सो यहाँ पे आएगा 1 by 3, then 1 by 2, then 1. So देखो यहाँ पे 1 by 2 1 जो इंटरवल होगा वो कंटेंट किसके अंदर होगा, कंटेंट होगा 1 by 3, 1 के अंदर. सो जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, हाफ का वैल्यू ज़्यादा है, वो जो इंटरवल होगा वो कंटेंट होगा जो वैल्यू लार्जर है. इसीलिए यहाँ पे 1 by m, 1 सबसेट ऑफ 1 by n, 1. Okay, now from here what can we say? Now take n is equal to maximum of n1, n2, nk. जो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिए थे n1, n2, nk, इस सब का हम मैक्सिमम ले लेते हैं. ठीक है, देन क्या होगा, देन ऑब्जर्व दैट any nj lesser equal to n, then by this result what can we say, 1 by nj, 1 is subset of 1 by n, 1. Okay, call this as 2. Okay, now what can we say from 1 and 2? From 1 and 2 we get 1 पे क्या था, 1 पे था a सबसेट ऑफ दैट, एंड 2 पे क्या था, जो यहाँ पे अगर ये सबसेट होगा तो इसका यूनियन भी सबसेट होगा. ओके, सो j इज इक्वल टू 1 to k, जो यूनियन होगा वो भी इसका सबसेट होगा. सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन वी से, सेट 0, 1 जो a सेट है ये सबसेट किसका होगा, 1 by n, 1.
ठीक है। सो 1/n, 1 के अंदर वो सबसेट हो गया। नाउ ऑब्जर्व दैट दिस कैन नॉट एक्चुअली पॉसिबल। So why this is not possible? Because if we take 1/n, that type 1/n, 1 and इसके अंदर घुसा क्या है 0, 1, ठीक है। 0, 1 1/n, 1 के अंदर है। सो यहाँ पे एक और वैल्यू होगा जो 1/2n होगा, जो कि 0, 1 पे तो नहीं है, लेकिन 1, n के अंदर है, 1/n, n के अंदर है। सो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। सो जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, जो सब कवर एज्यूम किया था कि देयर एग्जिस्ट एंड सब कवर, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से 0, 1 is not compact. So 0, 1 compact नहीं है, ठीक है। Now when 0, 1 will be compact? If we add 0 and 1, so if we take the interval as 0, 1 closed interval, then that will be a compact set. Okay, now we are going to prove that. Okay, हम लोग प्रूफ करेंगे कि 0, 1 कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम लोग जो ओपन कवर लिया था उसको ही लेते हैं। 1, n, 1, ओके। इसके साथ साथ हम लोग दो और ओपन सेट लेते हैं, एक है J0 एंड एक है J1, ठीक है। यहाँ पे J0 क्या है? J0 है ओपन सेट containing 0 एंड J1 क्या है? ओपन सेट containing 1. J0 क्या है? ओपन सेट containing 0 and J1 है ओपन सेट containing 1. We will prove that this open cover has a finite subcover. Okay. So we are going to prove that a subset of union of 1/n, 1 union J0, J1. We will prove that. Okay. Now we have already proved that this set is an open cover of open interval 0, 1. Okay. And this set J0 is open interval containing 0 and this set J1 is open interval containing 1. So as a whole this set is an open cover of the closed interval A. Okay, जो closed interval यहाँ पे 0, 1 इसका open interval है. Now we will prove that it has a finite subcover. क्या प्रूव करेंगे कि ये जो ओपन कवर है, आर्बिट्ररी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सबकवर, ठीक है। सो सपोज लेट x बिलोंग्स टू 0, 1. ओके, हम x एक एलिमेंट लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 होता है देन x बिलोंग्स टू J0, क्योंकि J0 क्या है? ओपन सेट कॉन्टेनिंग 0 और ओपन इंटरवल आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं, ओपन इंटरवल कॉन्टेनिंग J0, ठीक है। देन व्हाट कैन वी से फ्रॉम दिस? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट वी कैन से देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और से डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that 0 minus delta
0 plus delta is containing in Z0. ठीक है, 0 minus delta and 0 plus delta is contained in Z0. That means minus delta comma delta subset of J0. That can we say. Now if x is equal to 1, what can we say? Then x belongs to J1 similarly. So there exists epsilon greater than 0 such that 1 minus epsilon comma 1 plus epsilon will be contained in J1. ठीक है, similarly. Now what the fact remains? If 0 less x less 1. अगर x 0 भी नहीं है 1 है, so x 0 और 1 के बीच में रहेगा. Now what can we say? Then there are two possibilities. X can be less or equal to some 1 by n, okay, or 1 by n less than x less than 1. Okay, there is two possibility. Now if this happen, if x less or equal to 1 by n, ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट कैसे देख रहा होगा 1 by n के टाइप, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है. 0 और 1 के बीच कोई भी पॉइंट 1 by n के टाइप दिखता है. इसीलिए देयर आर टू पॉसिबिलिटी, x लेस और इक्वल टू 1 by n और 1 by n लेस x लेस 1. दैट्स वाई देयर आर टू पॉसिबिलिटी. नाउ इफ x लेस और इक्वल टू 1, तब क्या होगा? ठीक है, तब देखो हम लोगों को जो पहले डेल्टा मिला था, यहाँ पे जो डेल्टा यहाँ पे 0 मिला है, ठीक है, उससे हम क्या कह सकते हैं? फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0 by Archimedean property there exists n, okay, such that n delta greater than 1, that will imply 1 by n less than delta. ठीक है, so from that we can say, so what can we say? Actually आप यहाँ पे हम लोग जो ये n है, आप एक्चुअली हम कोई भी n ले सकते हैं, तो इसीलिए हम इस n को हम कैपिटल N ही ले लेंगे. ठीक है, हम ये जो n है इसी को लेंगे, n such that n delta less than 1 by n less than delta. Now from this x lesser equal to 1 by n, and from this n less than delta. So what we get? x less than delta. ठीक है, अब डेल्टा किसके अंदर कॉन्टेन है? माइनस डेल्टा लेस देन डेल्टा इज कॉन्टेनिंग J0. सो वी कैन से फ्रॉम दिस दैट x बिलोंग्स टू J0. ठीक है, सो अगर x 1 by n क्या लेस देन होगा तो वो J0 के अंदर कॉन्टेन हो जाएगा, और अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा. सो इफ वी टेक दैट सेट J0 union J1 union 1 by n comma 1, then this is an finite subcover, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ओपन सेट है. सो दिस इज एन फाइनाइट सबकवर ऑफ 0,1. दैट्स वाई एवरी ओपन कवर, हम लोग कहाँ से स्टार्ट किया था? यहाँ पे जो एक आर्बिट्ररी ओपन कवर लेके स्टार्ट किया था, हम कहाँ पे पहुँचे? एक फाइनाइट सब कवर, जो कि है दैट दिस इज एन फाइनाइट सब कवर. दैट वाई thus दिस इज एन कॉम्पैक्ट सेट. ठीक है, सो हम लोगों का अभी तक क्या क्या पढ़े? हम लोग को ओपन कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन देखा, कॉम्पैक्ट सेट के अंदर ओपन कवर का डेफिनेशन देखा, ओपन कवर के जरिए हम लोगों ने कॉम्पैक्ट सेट को डिफाइन किया. कॉम्पैक्ट सेट डिफाइन के बाद हम लोगों ने प्रूफ किया कि 0,1 ओपन इंटरवल जो कॉम्पैक्ट नहीं होता, वहाँ पे हम लोगों को देखा कि आर्बिट्ररी ओपन कवर का सब कवर फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट नहीं करता.
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्लोज्ड इंटरवल 0,1 का एवरी ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर, दैट वाइज वो क्लोज 0,1 is an compact set. Now we come to the next question. Example of compact sets are. एक R में कौन कौन सेट कॉम्पैक्ट होगा, जो चलिए देख लेते हैं. सो एग्जाम्पल के अंदर हम लोग जो देख सकते हैं, एग्जाम्पल के अंदर पहले ही हम लोग ने देखा कि एक नंबर पे जो क्लोज्ड इंटरवल 0,1 that means you can use any AB is an compact set. Next example, what can we say? That set 1 by n such that n belongs to natural number set, union अगर आप लेते हो 0, that set is an compact set. Why this is compact set? This set is closed and this is also bounded. हम लोग थोड़ी बात बोलेंगे कि आर में कौन कौन सा सेट कॉम्पैक्ट होगा, जो सेट एक्चुअली क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा. ठीक है, क्लोज भी होना पड़ेगा, बाउंडेड भी होगा. इसके पहले वाले वीडियो में आप अगर हम लीड एनालिसिस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली देख सकेंगे कि हम कब एक सेट को ओपन कहते हैं, कब से एक क्लोज सेट कहते हैं, कब एक बाउंडेड सेट कहते हैं. तो यहाँ पे क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों प्रॉपर्टी के मिलकर यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेट होता है. ठीक है. Now come to the last question. We have already said that when does a set in R is compact. Now some properties of compact set. हम लोग some properties देख लेते हैं compact set की कि properties क्या क्या होगा. ठीक है. So first property होगा कि any closed subset of a compact set is compact. ओके. अगर कोई भी एक कॉम्पैक्ट सेट होगा आर का, उसका अगर कोई भी आप क्लोज सबसेट लेते हो, इन दैट केस that set will be compact. ठीक है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे है वो है कि कोई भी फाइनाइट सेट, एनी फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट. ठीक है. आप कोई भी फाइनाइट सेट ले लो, 1, 2, 3. This set is compact. Why this is compact? कि bounded है, upper bound है 3, lower bound है 1, so this is unbounded as well as this is bounded as well as closed. ठीक है. इसकी वजह से कोई भी फाइनाइट सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड होता है, इसीलिए वो कॉम्पैक्ट भी होता है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कॉन्टिन्यूअस image of continuous image of any compact set is compact. अगर कोई भी सेट कॉन्टिन्यूअस इमेज हमेशा कॉम्पैक्ट ही होगा, कॉम्पैक्ट सेट का इमेज कॉम्पैक्ट. व्हाट दैट मीन्स, सपोज कोई भी सेट है f गोइंग टू x टू r, x टू y. ठीक है. अगर कोई भी सेट a x के अंदर कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट ले लो, देन what will be that image? That image is fa, which is subset of y. Then if this function is continuous, okay, continuous, then that fa is also continuous. ठीक है. So what we get, if any
function is continuous, then that will take any compact set to a compact set. No other possibility. compact set का image compact set ही होगा. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी सेट का इमेज क्लोज सेट का इमेज क्लोज नहीं भी हो सकता है, बाउंडेड सेट का इमेज बाउंडेड नहीं भी हो सकता है, लेकिन एज कॉम्पैक्ट सेट का इमेज कॉम्पैक्ट होता है, इसीलिए कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट अगर टुगेदर होता है तो उसका इमेज हमेशा क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही होगा. ये ADL एनालिसिस की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है. यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों भी आड़ होना पड़ेगा, तब हम बोल सकते हैं कि कोई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट का इमेज क्लोज्ड एंड बाउंडेड ही हो. So that is for now today. If you have any doubt regarding this video, please comment. I will answer your doubt. Till then, bye bye. We'll see you in the next video.